Very good morning, students. Welcome to Gyanmajari Vidyapith Mahuva online digital platform. So, students, as you know, I am your science teacher Vatsal Trivedi. So, आज हम बात करेंगे फिजिक्स यूनिट नंबर 1 की जो भी हम फ्रिक्शन वाला चैप्टर शुरू था वो भी हम आज वापस जहाँ से हमने डिस्कस किया था कि फ्रिक्शन क्या होता है और किस तरह से फ्रिक्शन को कौन से फैक्टर्स उस पर अफेक्ट करते हैं विच आर अवेलेबल इन योर कॉन्सेप्ट टाइम नंबर 7. देन आफ्टर अभी हम आज बात करेंगे ऑन योर एसपी पेज नंबर 13 कॉन्सेप्ट टाइम नंबर 8 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में. सो पहले से ही बता देता हूँ एज पर एज यू नो दैट द all the practice question or the all the practice question and और NCERT सिलेबस के जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो कुछ भी यहाँ पे आए जो मैं लिखा रहा हूँ सॉल्व करा रहा हूँ सारा का सारा क्वेश्चन आपको आपकी फेयर बुक के अंदर डायरेक्टली एज अ होमवर्क लिख कर सेंड करना होगा. ओके, so before this start today's session, let's take some daily review of the previous day. So let's start. See here some NCERT exercise on your screen. It is question number 1 on your page number 155 NCERT exercise. If you have a NCERT book, so please open, otherwise don't worry, you can directly solve to the video. First, fill in the blanks. A friction opposes the blank between the surface in contact with each other. So answer is a motion. Okay, then friction depends on the blank of the surface. It is a roughness of the surface and the friction produce heat. Next, yes, here it is practice question number 6 on your supplementary book page number 12 SB 12 पर और आपके पेज नंबर 91 पर अवेलेबल है 6.1. Why does a cricket ball rolling on the ground slow down and they sometimes stop before the reaching the boundary? So the correct answer is the friction between the ground and the ball opposes the state of the motion of ball. Thus, the reducing is speed and inequality bringing in to a halt. सो ये हमने एग्जाम्पल के अंदर भी देखा था और यहाँ पे भी हमने आंसर के अंदर हमने लिख रखा है. सो यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट सेम पेज प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6.2 इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इन द गिवन बिलो. यहाँ पे 3 इमेज है उसके अंदर आपको लिखना है टूवर्ड्स लेफ्ट, अपवर्ड्स एंड टूवर्ड्स लेफ्ट. सो फर्स्ट के अंदर फ्रिक्शन हमको ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मिलेगा, सेकेंड के अंदर ऊपरी डायरेक्शन के अंदर मिलेगा और थर्ड वन है उसके अंदर भी ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर हमको मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 6.3 एक्सप्लेन the relationship between the irregularities on two surfaces in contact and the friction between them. When two surfaces come in contact with each other, एग्जाम्पल प्लेसिंग अ बुक ऑन द फ्लोर, कोई भी दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है तब प्लेसिंग अ ब्लू बुक ऑन द फ्लोर एक एग्जाम्पल है. द टाइनी irregularities of the two surfaces interlock with each other. So these create the resistance to motion of the surface against each other, which expressed या experience as a friction. Okay, वो क्या होता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है. सो ये जो क्वेश्चन थे वो आपने अभी आई होप वीडियो पॉज करके आपने लिख लिए होंगे. अब हम चलते हैं आगे. जो हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, कौन सी टाइप का फ्रिक्शन होता है. तो हम देखेंगे कि देयर विल बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन है,
सील्डिंग फ्रिक्शन है और रोलिंग फ्रिक्शन है. You can see in your concept time number 8 SB 13 page number 92. Okay, so please open and अभी हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट टाइम नंबर 8 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. ओके, हियर द टाइटल इज टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन क्या होता है वो हमको मालूम हो गया है. ओके, उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं. सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फ्रिक्शन. सो हम देखते हैं क्या होता है. सो अभी आपको क्या करना है, आपके कॉन्सेप्ट टाइम नंबर 8 सप्लीमेंट्री बुक के अंदर ओपन रखना है. यस, सो इसके लिए क्रिएट द टेबल इन योर नोटबुक्स एंड नोट डाउन द ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग द एक्टिविटी. सबसे पहले कुछ एक्टिविटी करेंगे. आपको ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और ऑब्जर्वेशन, ये 3 हेडिंग करके एक टेबल बनाना है. स्टार्ट करते हैं. यू विल नीड टू दिस मटेरियल्स: थर्मोकोल बॉल्स, 10 मैच बॉक्सेस, 10 कार्ड पेपर शीट. First, keep the matchbox on hold on a card paper and try to move it. इसको हमको ये ट्राई करना है. Then observe the amount of force you apply to move the matchbox in this situation. आपको ये ऑब्जर्व करना है कि आपको उसको मूव करने में कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. Then observe the amount of force you apply to move matchbox after the starts it moving. Then after, now place a thermocol ball between the matchbox and the card paper. Then try to move matchbox keeping on the card paper on this situation. आपको ये देखना है. Now observe the amount of force that you can apply in a matchbox in this situation. So what does the difference moving the matchbox in the 3 cases? इसके अंदर कौन से आपको अलग अलग देखा. So first situation, rest on the card paper, box moving on the card paper, then box moving on a thermocol balls. So first, जब हमने टेबल के ऊपर उसको किया था, मूव फोर्स रिक्वायर्ड मूव. वाई? बिकॉज मोर फ्रिक्शन ड्यू टू द मोर टाइम और अ इंटरलॉकिंग. सेकेंड वन क्या था, मैच बॉक्स को हमने कार्ड पेपर पर मूव किया था. सो मॉडरेटेड फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव, उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स रिक्वायर करना पड़ रहा था. ओके, क्योंकि दोनों सरफेस एक दूसरे के साथ काफ़ी इंटरलॉकिंग कर रही थी. But whenever we moving the box on the thermocol balls, least force required to move. काफ़ी कम force require करना. क्यों? Because there is a produce the least friction due to the least time for all overlocking. ये आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो. So as a conclusion, we can say that the matchbox is required the maximum force to move when it is at the rest. Since the matchbox is stationary, the interlocking between the surface of matchbox and the card paper was more. So the friction when the matchbox is at rest is called the static friction. So हम static friction किसको बोलेंगे? The friction when the matchbox is a rest in cold. जब कोई भी फ्रिक्शन अपनी जगह पर रेस्ट पोजीशन में होगा. फॉर एन एग्जाम्पल जो हम नेक्स्ट देखेंगे उसको हम बोलेंगे क्या होता है. देन सेकेंड इज द मैचबॉक्स रिक्वायर्ड द स्लाइटली लेजर फोर्स मूव व्हेन इट इज ऑलरेडी मूविंग सिंस द मैचबॉक्स इज अ सील्डिंग. द इंटरलॉकिंग बिटवीन द सरफेस एंड मैचबॉक्स एंड कार्ड पेपर is a lesser than when it is necessary. So this friction in this case is called shielding friction. Now the last, the matchbox requires the least force when it is moving on the
थर्मोकोल बॉल जब वो कहाँ पे होता है, थर्मोकोल बॉल पे ऊपर उसको हम मूव कराते हैं. Since the contact of matchbox with the thermocol balls and the balls with the card paper for a very short time, reducing interlocking between the surface. So this friction in this case called the rolling friction. अभी इसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ, तो वो वीडियो देखने के बाद ये तीनों टाइप्स जो स्टैटिक, सिल्डिंग और रोलिंग फ्रिक्शन है वो किस तरह से वर्क करते हैं और किस जगह पे उसका वर्क होता है वो हम देखेंगे एक वीडियो के अंदर. सो लेट्स वॉच द वीडियो केयरफुली और अंडरस्टैंड द वेरी concentrate with understood. Okay, so now watch the video. Types of friction. We know that friction is caused due to the interlocking between the irregularities present on all surfaces. The nature of this interlocking, that is friction, can be divided into three types: static, sliding, and rolling. Let's look at examples of each of these types to understand them better. Static friction. Static friction occurs between surfaces that are in contact but not in motion. For example, when a matchbox is placed on a card paper, which is a flat surface, maximum interlocking occurs between the two surfaces, resulting in static friction. When we try to move this matchbox, which is at rest, the static friction prevents the matchbox from changing its state of rest. In our daily lives, when we try to push objects that are at rest, they resist movement due to static friction. Sliding friction. We saw that static friction prevents the movement of objects. Then, how do we move them? We need to apply a force that is stronger than static friction to make these objects move. Now, let's see what happens when the matchbox overcomes static friction and starts to move. As the matchbox is sliding over the card paper, the surfaces of both do not get enough time to interlock properly. Hence, the magnitude of the friction in this case is lower than that of static friction. Here, sliding friction occurs between the matchbox and the card paper. So, we say that when two objects slide over each other, sliding friction occurs. Rolling friction. Rolling friction occurs when an object rolls over a surface. Now, let's see what happens when the matchbox is moved over thermocol balls placed on the card paper. In this case, the surface of the matchbox and that of the card paper are not in contact. The matchbox moves over the thermocol balls as they roll over the surface of the card paper. The thermocol balls are in contact with the card paper and the matchbox for a very short time at every point. Hence, very little interlocking occurs between the three surfaces, due to which the least friction occurs. This type of friction is called rolling friction. Using the rollers attached to the legs of a chair or to the bottom of a suitcase to move these objects is an example of rolling friction. So today, we learned about three types of friction: static, sliding, and rolling friction. So it was a very amazing video and knowledgeable video. Static, sliding or rolling friction. There will be three types. First static, then slidings, then रोलिंग. स्टैटिक यानी कि हमको उसको काफ़ी फ्रिक्शन उसके ऊपर मिलता है. स्लाइडिंग यानी कि उसको हम स्लाइड करके मूव कर सकते हैं, वहाँ पे फ्रिक्शन थोड़ा लेस रहेगा. और रोलिंग के अंदर उसको हम रोल करके, बाय व्हील चेयर है, जो व्हील वाली सूटकेस आती है, वो सारी चीज़ रोलिंग ऑब्जेक्ट के फ्रिक्शन की साइंस के पीछे ही वर्क करती है. So now it's time to solve the NCERT exercise question number 8 on your page number 155. Explain why the sliding friction is less than the static friction. ऐसा क्यों होता है? Because of
When the objects are in a at a rest, the interlocking of irregularities is the two surfaces of the object is high. So when the object is moving, there is a rest interaction between that surface. This is why sliding friction is less than the static friction. ये आंसर आपको लिखना है. Then after, practice question number 7 on your supplementary book, page number SB 13, page number 92. So, a toy car released with the same initial speed with speed will travel farthest on the blank. So, what is the correct option? Polished marble surface, option B. Now, next question 7.2. List the three types of friction. Which of these is a least in magnitude and why? The three types of frictions are static, sliding, and the rolling friction. And the rolling friction is the least in magnitude since there is a least interlocking between the surface in this type of friction, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन लेस प्रोड्यूस होता है. Classify the following scenarios as having a static, sliding or rolling objects. Question number 7.3. So walking on marbles, it is a rolling friction. Slipping on the banana peel पर कोई बार हमारा पैर लग जाता है तो क्या होता है? We are slipped. So it is a sliding friction. In trying to push very heavy truck, कोई बहुत बड़ा ट्रक है उसको आपको पुश करके मूव करना है, सो वी कैन पुशिंग द हैवी ट्रक. सो एट ए टाइम देयर इज अ फ्रिक्शन इज अ स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि जो चीज़ वेट के बल खड़ी होती है उसको हम फोर्स करें तो नहीं मूव हो पा रही है क्योंकि वहाँ पे फोर्स कम हमारा हो रहा है बट फ्रिक्शन ज़्यादा है. सो दैट्स वाई स्टैटिक फ्रिक्शन. उससे कम sliding or as least amount of friction is called rolling friction. So students, I hope आप सबको आज का लेक्चर में सब कुछ समझ में आ गया है. फिर भी कोई भी डाउट्स है यू विल आस्क एनी टाइम. होमवर्क रिगार्डिंग्स जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन है वो सेम रहेगी. सभी के डेली के जो कुछ भी क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. सो अभी के लिए हम यहाँ तक रखेंगे. सो अभी के लिए स्टे हैप्पी, स्टे होम. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. टेक केयर. फन विद साइंस. एंजॉय द साइंस.